Okay, there you are. So the highlight of today's session होगा, हम लोग कोडिपेंडेंसी सोसाइटी के बारे में बात कर रहे हैं, उसके इंट्रोडक्शन के बारे में बात होगी, कोडिपेंडेंसी होती क्या है और उसका असर हम पे क्या होता है। कुछ चीजें गुफ्तगू के दौरान होंगी, फ्यू टिप्स कि हम उस पर कैसे काम कर सकते हैं, और एक बहुत बेहतरीन मौका आपके लिए ताकि आप सवाल कर सके कोडिपेंडेंसी के ऊपर। राइट, लेट्स मूव फॉरवर्ड। मैं हूँ वफा खान और मैं एक सर्टिफाइड लाइफ कोच हूँ और आई एम ऑल्सो अ फाउंडर ऑफ सोल एम्पावरमेंट कोचिंग। ये एक ऐसा इदारा है जो हर लिहाज से तालीम पे काम करता है, चाहे वो लाइफ स्किल्स हो, चाहे वो कोई एकेडमिक स्किल्स हो, चाहे वो कोई एक ऐसा जरिया हो जिससे सिर्फ इंसान को अपनी वक्ती तौर के ऊपर स्किल को डेवलप ना करना हो, बट एक इदारा ऐसा जिसमें हम अपने आप को ग्रोथ दे सकें। So I've been an educationist for 20 years. ये एक ऐसी फील्ड थी जिस when I got into it and I absolutely loved it. इसी दौरान मैंने एक सेल्फ सर्टिफिकेशन किया अपना, which is coming from Cambridge, जिसमें मुझे सर्टिफिकेट मिल जाता है कि I can actually teach English. And yes, I'm a mother of 4 boys. और ये एक मेरा बहुत अहम किरदार है और मैं जितने भी स्किल्स लर्न करती हूँ मैं डेफिनेटली 100% उसको अप्लाई और टेस्ट करती हूँ, बिकॉज देयर इज नथिंग दैट इज ओनली थ्योरी बेस्ड, यू ओनली कैन टीच जब आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। एंड आई एम ऑल्सो अ I think I got disconnected. Let me start where I stopped. So yes, I am a public speaker and I have spoken at different forums and different platforms. और मैं इस platforms में I provide speeches on different topics. Right. So let's move forward. What is my vision? My vision always reflects on my coaching, because you can only do as much जितना आपका नजरिया हो, जितना आपका विजन हो। और मेरा विजन कंप्लीटली एक सोल को एम्पावर करना है थ्रू सेल्फ अवेयरनेस, यानी बेदारी के थ्रू, एक इंसान को मारिफत के थ्रू, क्योंकि हर चीज की जो कोर है वो सिर्फ और सिर्फ मारिफत में है। और आप जितना अपने आप को अवेयर करते हैं हालात के बारे में, सराउंडिंग्स के बारे में, अपने बारे में और आगे आपके मकसद के बारे में, आपका विजन क्लियर होता जाता है और आपके लिए जो सफर है जिंदगी का ये बहुत आसान होता है। So I have totally believed in this, and change is something जो दौरान सफर ये पूरी जिंदगी में आपको एक्सपीरियंस करना पड़ता है, and this is my vision over here. Now let's move on codependency. मैं तस्वीर ढूंढ रही थी कि मैंने कहा कि कोई होगी सूरत जिसमें हमें पता चल जाएगा कि भाई कोडेपेंडेंसी एक तस्वीर में कैसे नजर आएगी। एंड यकीन जानिए कि कोई तस्वीर मिल नहीं रही थी, बिकॉज कोडेपेंडेंसी रिलेशनशिप में पाई जाती है। ये रिलेशनशिप माँ बाप के साथ भी हो सकता है, ये रिलेशनशिप आपका बहन भाई के साथ हो सकता है, दोस्तों के साथ, हस्बैंड वाइफ के साथ, बच्चों के साथ, मुख्तलिफ रिलेशनशिप जो आप अपने इर्द गिर्द सोसाइटी में शेयर करते हैं। Now, but what is codependency? And I like to ask you all, आप में से कोई बताना चाहेगा codependency है क्या? Anyone? अगर आप बताना चाहे codependency है क्या आपके नजरिए में, तो हम उसके ऊपर आगे इसको लेके चलते हैं। It's okay. There's no right and wrong answer. It's not a test. तो कोई बात नहीं, आप बताने की कोशिश कीजिए। Anyone? हर एक के अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम अदिला। जी
मेरे ख्याल के मुताबिक कोडिपेंडेंसी जो है वो किसी पर इन्हिसार करना मीन अपनी मतलब कुव्वत इरादी जो है, सॉरी कुव्वत हम्म। इरादी नहीं, मतलब किसी भी मामले में जो है किसी पर पूरा ही डिपेंडेंट हो जाना और अपनी तरफ से कुछ एफर्ट ना करना। हाँ, यस जी जी रबिया बताइए। हाँ। मेरे ख्याल से ये कि हम छोटी छोटी चीजों मेरी के एक तुम्हारी है और वहाँ भी तुम्हारी कुछ चीजें रखी हैं। खुद करने के बजाय लोगों की तरफ देखेंगे, भी फलां मेरा ये काम कर देगा, बिल्कुल ही अपने आप को तोड़ देना कि अपने आप को वर्थ ना देना कि आपके अंदर अपनी भी सलाहियतें, आप वो काम ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं, कि इसके बजाय कि आप दूसरों की तरफ हर वक्त देखते रहें। जी बिल्कुल बिल्कुल, यानी अपनी सलाहियतों पे नहीं, दूसरों की सलाहियतों पे ज्यादा तवज्जो देना और ज्यादा उन पे फोकस देना। अच्छा, यू आर राइट, लेकिन अब कुछ चीजें हम इसमें देखते हैं। कोडिपेंडेंसी है, आती कैसे है और इसको आप कैसे अपने, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कोडिपेंडेंट हैं, हमें अंदाजा नहीं होता, शायद हम सिवियरली कोडिपेंडेंट ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं हम कोडिपेंडेंट हैं। अब मिसाल के तौर पे कि हम, हमारी सेल्फ एस्टीम अफेक्टेड है। सेल्फ एस्टीम यानी कि हमें अपने आप पे ट्रस्ट नहीं है, तो हम कहाँ से ढूंढते ये चीजें, हमें ये चीजें सिखाई जाती हैं। ऐसा नहीं है कि आप कोडिपेंडेंट पैदाइशी तौर पे सिर्फ रहे, बट दिस इज अ लर्न्ड बिहेवियर। और कोडिपेंडेंसी कोई, अल्लाह ने इंसान को खुद मुख्तार बनाया है, बट येट हम इस कुछ चीजें बिहेवियर सीखते हैं जो हमें एक अजीब से विशियस साइकिल में इन्वॉल्व कर देता है। ये माहौल से सीखते हैं, आप माँ बाप से सीखते हैं, आप किसी अपने पार्टनर से सीखते हैं, लेकिन आप कोडिपेंडेंट हो जाते हैं। अच्छा, अनदर इंटरेस्टिंग थिंग इसमें ये भी है कि ये जनरेशन टू जनरेशन कोडिपेंडेंसी पास भी होती है। मिसाल के तौर पे अगर माँ कोडिपेंडेंट है तो औलाद भी कोडिपेंडेंट होगी, इसमें कोई शक नहीं है, बहुत ज्यादा चांसेस है, अनलेस उसकी जिंदगी में कोई ऐसा किरदार आए जो उसको इस पैटर्न से चेंज कर दे। कोडिपेंडेंसी नीड से मैसर होती है, हमारी नीड्स लोगों से हैं, वी नीड ईच अदर। अल्लाह ने हमें इस तरह खल्क किया है कि हम एक सोशल एनिमल है, हम डिपेंड करते हैं किसी चीज से, लेकिन उसमें भी एक हेल्दी नीड होती है और एक अनहेल्दी नीड होती है। अब हेल्दी नीड हमें कैसे पता चलेगा और अनहेल्दी नीड हमें कैसे पता चलेगा? बहुत आसानी से। अनहेल्दी तब जब मेरी पहचान आपकी वजूद से हो, ये अनहेल्दी है। यानी एक बहुत खूबसूरत मिसाल थी कि गुलाब का जो फूल है, अगर वो बहुत ही अजीब और डिफरेंट और मामूली फूलों के बीच में रख दिया जाए, क्या वो अपनी वैल्यू खो देगा? या उसको सहरा में रख दे, सहरा में रख दिया जाए, क्या वो अपनी वैल्यू खो देगा? नहीं, ये हमारी नीड है कि हमारी अपनी पहचान एक अलग है, पर वो हमारी पहचान किसी और की वजह से जल्दी है। बुलाया था, खेलती रहती है अपना। Okay, I'm going to mute Rabia. Right. Okay. दूसरी चीज, हमारी डिपेंडेंस, हम डिपेंड भी करते हैं लोगों पे, लेकिन दो किस्म की डिपेंडेंस होती है। एक वो डिपेंडेंस होती है जो हेल्दी है और एक वो डिपेंडेंस होती है जो अनहेल्दी है। यानी हम सोशल एनिमल्स तो हैं, लेकिन अगेन हम डिपेंड करते हैं कि अगर जैसे हमारा पार्टनर या हमारे बहन भाई या हमारी औलाद को जब माँ की जरूरत होगी तो ही मेरी कदर होगी, तो ही मेरी वैल्यू होगी, ऐसा नहीं है। माँ माँ है, चाहे उसकी जरूरत हो या ना हो, बट वी डिपेंड ऑन दैट। और हम अपनी पहचान और अपनी वैल्यू सिर्फ इस डिपेंडेंट से बना देते हैं। स्ट्रेंज है लेकिन हकीकत है। सो द फीलिंग टू बी नीडेड इज कॉल्ड कोडिपेंडेंसी। लेट्स गो फॉरवर्ड। अगर आपके पास पेन और पेंसिल है तो बहुत अच्छा होगा कि आप अपने आप को स्कोर करना शुरू कर दें, क्योंकि हम एक अभी कोडिपेंडेंसी टेस्ट करने वाले हैं और इस तरह आपको पता चल जाएगा कि हम कोडिपेंडेंट कैसे हैं सोसाइटी में एंड व्हाट आर द साइंस ऑफ इट। वेरी सिंपल।
अगर आपके पास स्कोर ज्यादा आ रहा है आउट ऑफ 11, तो किसी हद तक आप महसूस कर सकते हैं कि आप कोडिपेंडेंट हैं। अगर नहीं तो बहुत अच्छी बात है। फिर अपने इर्द गिर्द के लोगों पे ये देखिए कि क्या वो कोडिपेंडेंट है कि नहीं। शायद वो आपके हस्बैंड हो, शायद आपके माँ बाप हो, शायद आपकी औलाद हो, एनीवन, बट जरूर ऑब्जर्व कीजिए क्या वो कोडिपेंडेंट है। सो दिस इज गोइंग टू बी अ लिटिल एनालिसिस। इफ यू आर रेडी, मुझे बताइए, thumbs up if you're ready, so we can begin the test. अगर आपको पेन और पेंसिल चाहिए, get it or start scoring yourself. Let me know if you're ready. Well, someone's ready. Brilliant. Great job. Or Aim Khan is ready. Anybody else? आप लोग ready हैं? Let's begin. Great. Great. Okay. Adila भी ready है. अच्छा. Now, let's move forward. You feel responsible जब लोगों के मसले मसाइल होते हैं, यानी आपके बच्चों के मसले मसाइल हों, चाहे आपके हस्बैंड के हों, चाहे आपके वाइफ के हों, अगर लोगों के मसले मसाइल होते हैं तो आप रिस्पॉन्सिबल फील करते हैं। रिस्पॉन्सिबल इस तरह कि शायद अगर मैं इस चीज को फिक्स ना करूं या इसमें बेहतरी ना लाऊं तो मेरा रिलेशनशिप इतना बेहतर नहीं होगा, या अगर मैं इसमें कोई चीज अमल ना करूं तो शायद उसको मेरी जरूरत नहीं होगी। अगर बच्चों को इस वक्त मैं ये काम करके ना दूं तो फिर कौन करेगा बच्चों के लिए काम। द फीलिंग ऑफ बीइंग नीडेड, कि मुझे ही करना है, दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली फीलिंग। एंड यकीन जानिए कि आई हैव सीन अ लॉट ऑफ मदर्स, बिकॉज यहाँ पे आई एम श्योर सारी मदर्स हैं, अ लॉट ऑफ मदर्स फीलिंग दिस एंड दे कम के अगर मैं उनको करके ना दूं तो कौन करेगा। एंड दे लिव विद द इन-लॉज एंड दैट साइकिल, और वो अजीब सा साइकिल होता है जिसमें वो फील कर रहे थे कॉन्स्टेंटली कि आई नीड टू डू दिस, अगर मैं ना करूं, हालांकि एवरीबडी इज केपेबल, बट येट दैट फीलिंग ऑफ बीइंग रिस्पॉन्सिबल एंड देन ऑन द टॉप फीलिंग गिल्टी अबाउट इट। ये मैंने नहीं किया तो क्या मेरी वैल्यू कम हो जाएगी, क्या मेरी कदर कम हो जाएगी इसमें। That's first sign. Second sign, हमें ना कहने में बड़ी दिक्कत पेश आती है। हम ना नहीं कह पाते। ना कहने कोई बुरी चीज तो नहीं है, पर ना कहना डिपेंडिंग कि हम इस वक्त उनकी हेल्प कर सकते हैं कि नहीं, हमारी प्रायोरिटी क्या है, हमारी जरूरत क्या है, क्या हम ये सारी इस वक्त ना कहना, हमें बड़ी तकलीफ होती है ना कहने में। और ना इसलिए कहने में तकलीफ होती है बिकॉज हमने बाउंड्री सेटिंग नहीं की हुई। When we haven't done the boundary setting, तो हम और भी हमें प्रॉब्लम होती है बिकॉज आगे वाले इंसान को ये नहीं पता होता कि what is our boundary, what is our limit. Okay, point number 3, रिश्तों में उसको जिंदा रखने में, रिश्तों को निभाने में हम सिर्फ अपने आप को रिस्पॉन्सिबल ठहराते हैं। यानी अगर रिश्ता कायम है तो वो हमारी वजह से है, रिश्ता कायम है और उसके अंदर जान है तो वो सिर्फ हमारी वजह से। यानी हम ही सारे किरदार को अदा कर रहे हैं, और जो हमारे ऑपोजिट हैं, चाहे वो बच्चे हों, हस्बैंड हो, दोस्त हों, उनकी तरफ से इतना रिलेशनशिप में इनपुट नहीं है जितना हमारा है। And what happens because of that? We end up feeling terrible. That's what it is. The survival of the relationship just depends on us. ये भी जरा गौर करिए कि ऐसा कोई मौका है, ऐसा कोई रिश्ता है जहां पे आपको ये महसूस होता हो। अगर कोई आपकी वैल्यू नहीं पहचानता, नंबर 4, आपकी कोई वैल्यू नहीं पहचानता, आपके काम की कोई तारीफ नहीं करता, आपको वो क्रेडिट नहीं देता कि फॉर हाउ मच एफर्ट
you're putting into that relationship. Usually husband and wife relationship में and औलाद के साथ ये ज़्यादातर I've seen that women have these complaints कि मैं इतना करती हूँ और मेरी औलाद मेरी कदर नहीं करती, या बीवी के रूप में मैं इतना करती हूँ, इतनी कुर्बानियां देती हूँ, बट मेरे शौहर मेरी वैल्यू नहीं करते, मैं करती रहती हूँ और मुझे कुछ मिलता नहीं है। क्या ऐसा तो नहीं? बिकॉज वी गेट हर्ट एट द एंड, हमें उसी से बड़ी तकलीफ होती है, और वो तकलीफ हमें फील करती है, हमारे सेल्फ एस्टीम पर रिलेट करती है, हमें वो कॉन्फिडेंस नहीं आता टू डू अदर थिंग्स, हम फैसले नहीं ले सकते जस्ट बिकॉज ऑफ दिस पॉइंट, क्योंकि वी कीप गेटिंग हर्ट एंड वी आर नॉट एबल टू रिकॉग्नाइज आवर पोजीशन, आवर वैल्यू। नंबर 5, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, और ये जो पॉइंट है, आई वांट टू से दिस दैट मैं कोडिपेंडेंट पर्सन रही हूँ अपनी लाइफ में बहुत अरसे तक। व्हाई? बिकॉज अब मैं जानती हूँ कि मैं कोडिपेंडेंट क्यों थी, एंड उस कोडिपेंडेंसी में आई फेल्ट कि आई वाज ऑलवेज बीइंग कंट्रोल्ड। मतलब मुझे क्या कहना है उसका कंट्रोल, मुझे क्या बोलना है उसका कंट्रोल, मुझे क्या करना चाहिए उसका कंट्रोल दूसरों के हाथों में होता था। और अगर मैं ये ना करूं तो मुझे लगता था कि आई डिड नॉट डू द राइट थिंग। क्यों? क्योंकि द अदर पर्सन डिड नॉट फील राइट अबाउट इट। मैंने अपने आप को ट्रस्ट नहीं किया। मुझे वो कहना चाहिए जो आई फील राइट, मुझे वो करना चाहिए जो आई फील राइट, बट I always felt that the other person has the control, and I started living as a codependent person. And interestingly, ये एक चीज आप बच्चों में पास ऑन करते हैं। Let's move on to point number 6. Because आप सामना नहीं करना चाहते चीजों का, जो चीजें कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करती हैं, तनाव क्रिएट करती हैं, आप उनका सामना नहीं करना चाहते, तो आप फिर वो करने लगते हैं जो दूसरे आपसे कहते हैं और करना चाहते हैं कि आप करें, जस्ट बिकॉज आप कॉन्फ्लिक्ट का सामना नहीं करना चाहते। देखिए, हमें कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन एक स्किल है जो हमें सीखना चाहिए। ये स्किल बेसिकली स्कूल में सिखाया जाना चाहिए, जो कि सिखाया नहीं जाता। कि कॉन्फ्लिक्ट का सामना करना एक बहुत बड़ा वैल्यू है, एक पर्सनालिटी का हिस्सा है, पर एट द सेम टाइम उस कॉन्फ्लिक्ट का सामना करना, उसको कैसे हैंडल करना जिसमें ना आप अपने वैल्यूज को डिग्रेड करें, ना आप दूसरों की वैल्यूज को डिग्रेड करें। बट वंस यू डू इट, आपको ये चीज मिलती है कि आपको पता चलता है आप कर क्या रहे। द मोर यू प्रैक्टिस द बेटर यू गेट इट। बट बिकॉज हम अवॉइड करते हैं कॉन्फ्लिक्ट करना कि लोग क्या कहेंगे अगर ये बात हो गई, बिकॉज ये पैटर्न दूसरों ने कभी भी फॉलो नहीं किया और इस पे कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, तो हमें ये चीज नहीं करनी चाहिए। अच्छा, ये चीज ज्यादातर इसमें भी पाई जाती है, बहुत बड़े स्केल में पाई जाती है, कि अगर हमने अपनी बेटी को जहेज नहीं दिया तो लोग क्या कहेंगे, एंड इसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होगा, ये रिश्ता हाथ से चला जाएगा। माँ बाप को डिपेंडेंट है और वो बेटी फिर को डिपेंडेंट बन जाती है सोसाइटी में जाके, फिर वही बेटी को डिपेंडेंट बच्चों को नर्चर करती है, बिकॉज उसका माइंडसेट इस पे डिपेंड करता है, उसका रिश्ता इस चीज पे डिपेंड करता है कि जिस चीज पे वो आई है। तो अवॉइडिंग कॉन्फ्लिक्ट एक बहुत बड़ा हिस्सा है। हम जॉब पे भी कितनी बार वो चीजें कर देते हैं, एक्सेप्ट कर देते हैं, जस्ट बिकॉज we don't want others to say कि हमने वो किया जो हमें नहीं करना चाहिए था या किसी ने नहीं किया, और उसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो सकता है। हम किसी के दूसरों के गलत काम पे भी पर्दा डाल देते हैं बिकॉज हम कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट नहीं करना चाहते। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन एक बहुत ही बड़ा और अहम स्किल है। ये मैं अपने बच्चों को बहुत ही एक इंसिस्ट करती हूँ कि वो सीखें और इस पे अमल करें। एंड देयर इज अ नाइस इंटरेस्टिंग मेथड जिससे हमें सीखना चाहिए कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। एंड व्हेन इट इज क्लियर
ये आसान हो जाता है और हम बहुत से चैलेंजेस इन लाइफ, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट चैलेंजेस से आते हैं, तो हम चैलेंजेस को सामना करने की ताकत और स्किल रखते हैं। वो शुजात हम में आ जाती है जिस शुजात की हमें जरूरत है, वरना हम खौफ में रहते हैं। और ये खौफ कि अगर मैं इस कॉन्फ्लिक्ट में आ गई और मैंने कुछ ऐसा कर दिया तो शायद हमारा रिश्ता वैसा ना रहे, वो डर। लेट्स हैव अ लुक एट पॉइंट नंबर 7। आप अपने आप को ट्रस्ट भी नहीं कर पाते। एंड व्हाई कैन यू ट्रस्ट योरसेल्फ? बिकॉज आपको पता नहीं है अपने बारे में, आप सेल्फ अवेयर नहीं है। जब आप सेल्फ अवेयर नहीं है तो आप मिस्टेक्स तो करते हैं, मिस्टेक्स तो हर कोई करता है, बट व्हाट मिस्टेक्स आप करते हैं और कौन सी मिस्टेक्स अवॉइड की जा सकती हैं? क्या बात को कब कहना है और कैसे कहना है, हमारी तवज्जो उस पे नहीं रहती है। And what happens is, because we're trying to avoid those mistakes, हमें पता नहीं है कि ये अवॉइडेबल है कि ये अवॉइडेबल नहीं है, और ये क्या ये मिस्टेक्स हैं या ये हमारी चॉइसेस हैं। एंड देन व्हाट हैपेंस, हम इस चीज में आ जाते हैं एंड हम इस अजीब से साइकिल में फंस जाते हैं जिसमें हम अपने आप को ट्रस्ट नहीं कर पाते। एंड फिर जब हम ट्रस्ट नहीं कर पाते तो फिर हम अपने आप को कह नहीं पाते कि हम खुद मुख्तार, हम कॉन्फिडेंट हैं और हमारी सेल्फ एस्टीम को कुछ नहीं हुआ है। हम में से ही उठ के लोग बहुत बड़े चैलेंजेस का सामना करते हैं और एक लाइफ साइकिल, एक बड़े अजीब से साइकिल को ब्रेक करते हैं और कुछ बन जाते हैं। दे गेट कॉन्फिडेंट एट इट, बट वी बीइंग केपेबल हम नहीं कर पाते। दैट्स समथिंग टू थिंक अबाउट। पॉइंट नंबर 8, this is very interesting. I have to say this कि मैं इसके बारे में जितना इंसिस्ट करूं कम है, पर ये एक ऐसे लेवल पे आपको ये बात फील और समझ आएगी, समझ शायद आ जाए, बट व्हेन यू फील द रियलिटी ऑफ इट देन यू रियलाइज कि ये चीज हम एक बहुत अजीब से टैंगल्ड अप चीज में फंसे हुए हैं। और वो क्या है? हमारे मूवीज, हमारे ड्रामास, हमारी नॉवेल्स, हमारे किताबें, हमारी स्टोरीज, हमारे यूट्यूब वीडियोस, हमारी एवरीथिंग, जो कंप्लीट एक्सपोजर आपको मिला है, कंप्लीट एक्सपोजर जो आप देखते हैं, जो आप सुनते हैं, जो आप पढ़ते हैं, एंड हत्ता कि जब आप खाना खा रहे होते हैं, जब टाइम होता है खाना खाने का, माइंडफुली आपके दिमाग में और आपको कॉन्स्टेंटली ये चीज फीड की जा रही होती है कि हम इसके बगैर रह नहीं सकते। आप कॉन्स्टेंटली ये फीलिंग अपने पार्टनर के बारे में फील करते हैं, अपने बच्चों के बारे में फील करते हैं, अपने दोस्तों के बारे में फील करते हैं, अपने माँ बाप के बारे में फील करते हैं। एंड यू नो, हैविंग लव एंड अफेक्शन फॉर समबडी इज डिफरेंट, बट वो फीलिंग कि हम इनके बगैर रह नहीं सकते, जो कि हमें नॉवेल्स में बहुत मिलता है, हमें ड्रामों में बहुत मिलता है, हमें फिल्मों में बहुत मिलता है। एक वक्त है जो बॉलीवुड की फिल्में वर हर कोई देख रहा होता था और उसमें यही चीज होती थी कि हम रह नहीं सकते। वो लैला मजनू की कहानियां, वो हीर रांझा एंड ऑल दोस कहानियां, कि दे हैड टू डाई फॉर द सेक ऑफ लव। All this nurture किया गया सबकॉन्शियसली, एंड जहां पे हम अपनी वैल्यूज और अपनी नीड्स को कॉम्प्रोमाइज करने लगते हैं। Now hand on your heart everyone and tell me, कितने लोगों को पता है कि हमारी वैल्यूज क्या है? आपको पता है कि वैल्यूज क्या है? Hand on your heart, अपने हाथ दिल पे रख के बताइए कि आपको वाकई पता है कि आपकी वैल्यूज। हमें शायद अपनी नीड्स के बारे में अंदाजा होगा, हमारी नीड्स आर वेरी फ्यू, क्योंकि आप शायद उस चीजें और सर्वाइव कर चुके हैं। और क्या आपको अपनी वैल्यूज के बारे में अंदाजा है? आस्क योरसेल्फ दिस क्वेश्चन, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
नाउ कैन यू लिव विदाउट योर वैल्यूज? क्या इंसान में और जानवर में यही फर्क नहीं है कि इंसान एक वैल्यूज और चॉइसेस के ऊपर जीता है और जानवर सिर्फ नीड्स के ऊपर जीता है? उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, उसकी चॉइसेस और बस उसकी नीड्स पे हैं। एक गोश्तखोर जानवर गोश्त खाएगा, वो चूज करेगा कि मैंने गोश्त खाना है, बट वो घास नहीं खाएगा बिकॉज वो उसकी नीड पे है। बट हमारी वैल्यूज are compromised? Ask yourself this question. And how many times आपने अपनी वैल्यू की कुर्बानी दी है? How many times? कभी माँ बाप के लिए, कभी बहन भाई के लिए, कभी दोस्तों के लिए, कभी शौहर या बीवी के लिए, कभी बच्चों के लिए। Ask yourself this question because it's a very important question and I ask myself this question every day. मेरी वैल्यूज क्या हैं? क्योंकि हमारी वैल्यूज वक्त के साथ तब्दील भी हो सकती हैं और उन वैल्यूज को हम एडजस्ट करते रहते हैं और फिर हमें पता चलता है हमारी वैल्यू कौन सी है जो टॉप की है और जिस पे आप रहते हैं। That's a very important point. Let's see what's point number 9. You do anything to make the other person feel happy. एक कोडिपेंडेंट पर्सन बहुत ही अच्छा पर्सन है कि वो दूसरे की खातिर कुछ भी कर देगा ताकि वो खुश हो जाए। उसमें ये सलाहियत अमेजिंग है कि वो दूसरे को खुश करने के लिए कुछ भी कर सकता है। एंड आप जो किसी कोडिपेंडेंट पर्सन, अगर आप कोडिपेंडेंट नहीं हैं और आप किसी कोडिपेंडेंट पर्सन के साथ हैं तो यू वुड नो कि वो फीलिंग बड़ी अच्छी है, बादशाह वाली फीलिंग है कि ये मेरे लिए कुछ भी कर सकती है या कुछ भी कर सकता है। And let's see how much share do you have in this to make the other person feel better. Just feel better. ये one way relationship है. You only want the other person to feel better and great about it. लेकिन that person makes you feel better or great, ये एक दूसरी बात है। Fine, we've done 9 points and let's see point number 10. क्या आपको इल्म है अपनी फीलिंग्स के बारे में? क्या आपको कौन सी चीज सही लगती है और कौन सी चीज सही नहीं लगती? क्या आप जानते हैं या जानती हैं कि आपकी जो फीलिंग्स हैं वो किस चीज पे डिपेंड करती हैं, किस एक्शन पे डिपेंड करती हैं? आप कितने बार अपने बारे में जानते हैं? यूजुअली आप दूसरे पर्सन को इतना बेहतर फील कराने के चक्कर में अपनी फीलिंग्स को भूल जाते हैं दैट आप अपनी वेलबींग के बारे में कोई वैल्यू नहीं रहती। आपकी भी तो वेलबींग है। व्हाट इज मेंटल हेल्थ? व्हाट इज हेल्दी माइंडसेट? व्हाट इज हेल्दी बाउंड्रीज? व्हाट आर हेल्दी बाउंड्रीज? हमें तो इस बारे में कुछ इल्म है कि नहीं है? इस बारे में जरूर सोचें कि कितना इल्म है आपको अबाउट हेल्दी बाउंड्रीज, अपनी वेलबींग के बारे में, अपनी फीलिंग्स के बारे में कि आज सुबह मैं उठी हूँ बट आई एम नॉट फीलिंग ग्रेट। इट इज ओके टू नॉट फील ग्रेट, बट व्हाई एम आई नॉट फीलिंग ग्रेट? ऐसा क्या हुआ है? इस सवाल करें और देखें कि व्हाट आंसर्स डू यू गेट। And the last one, आपकी रिलेशनशिप में वैल्यू, आपकी अहमियत, आपकी हर चीज सिर्फ इस बात में इन्हिसार करती है कि अगले पर्सन को आपकी कितनी जरूरत है। अगले पर्सन को आपकी कितनी जरूरत है। That's the only worth you have. That's the only worth you have if you're a codependent person.
So identify yourself. Are you a codependent person or not? ये 11 points हैं और इन 11 points से अपने स्कोर को देखिए, जरा गिनती कीजिए कि how much do you score? क्या हर पॉइंट पे आपने अपने आप को टिक किया है या 1 स्कोर दिया है? It all depends on you. If you are not the codependent person, then कोई इर्द गिर्द आपके codependent है, क्या हम उसकी फीलिंग पे एक्ट करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं, या वो हमारी फीलिंग पे एक्ट और रिस्पॉन्ड करता है? मिसाल के तौर पे हमारी औलाद, हम औलाद को बोलते हैं कि माँ बाप को जब ये चीज पसंद नहीं है तो ये मत बोलो, ये मत कहो। हालांकि औलाद के पास चॉइस है अपनी राय देने के लिए, अपने शौक, अपने लाइक्स एंड डिसलाइक्स बयान करने के लिए। तो सोचिए कि ये बात कितनी इस बात पे इन्हिसार करती है। These are the 11 points of codependency. Fine. Anybody would like to share? हम अभी क्वेश्चन एंड आंसर के सेशन में जाएंगे। कोई शेयर करना चाहेगा, कोई इन पॉइंट्स पे बात कहना चाहेगा? आई एम रेडी एंड ओपन कि कोई आए और सवाल करे या कुछ पूछे। अप टू यू। अस्सलाम वालेकुम वफा, हाउ आर यू? वालेकुम सलाम, आई एम गुड, थैंक यू। मुझे एक क्वेश्चन है या एक बात शेयर करनी है कि कोड डिपेंडेंट पर्सन क्या हर वक्त इनसिक्योर रहता है? जी, it's a very good question, Rabia, and I actually like that question because आपने बड़ा ऑन स्पॉट क्वेश्चन किया है। क्या कोडिपेंडेंट पर्सन इनसिक्योर रहता है? जी, वो इनसिक्योर इसलिए रहता है क्योंकि वो अपने आप पे ट्रस्ट नहीं करता, एक चीज। दूसरी चीज, वो दूसरे पे डिपेंड करता है कि उसके नीड के बारे में, उसकी जरूरत के बारे में। वो, अगर मुझे एक लफ्ज यूज करना पड़े ना, कोडिपेंडेंट पर्सन बहुत मोहताज होता है दूसरों की चीजों पे। So yes, a codependent person is quite insecure. Does that answer your question, Rabia? Okay, but I just want to ask like a codependent person finds his happiness in others' approval. Is that right? Obviously, that codependent person finds happiness in others' approval. उसकी सारी चीज अदर से रिलेटेड होती है। मिसाल के तौर पे, रबिया, इफ आई एम, आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आपने अगर फर्ज करें अपनी पसंद के कपड़े पहन लिए और वो कपड़े आपके माशरे में, लाइक आई वुडंट से माशरा, लेट्स जस्ट से सोसाइटी, जो करीबी इर्द गिर्द का माहौल है आपका, उसमें वो कपड़े आपने कई बार पहने हों और आपको लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ये क्या पहन के आ जाती है, हर वक्त एक ही कपड़ा पहन के आ जाती है। How does that make you feel? Rabia, how does that make you feel? Yes, of course, I will feel awkward, and it will obviously disturb my peace of mind for sure. Yes. पर हम क्यों सोच रहे हैं कि वो हमारी फीलिंग्स और हमारी चीज पे रखें? Is that a need for you? हम उनके अप्रूवल पे डिपेंड कर रहे हैं ना, कि वो हमें एक्सेप्ट करें बाय द ड्रेस वी आर वेयरिंग। और अब आपको ये ड्रेस की मिसाल दी है, बट इस तरह आप दूसरी चीजों को लेके आ जाएं तो उसमें बिहेवियर हो सकता है, उसमें चॉइसेस हो सकती हैं। Okay, I have another question. I am a very reserved kind of person, especially when it comes to in-laws. I don't get mixed up. Okay, it's been 9 years, but I'm still reserved. There are many reasons behind it. Many different kind of reasons. Firstly, कि एक तो मेरा नेचर भी थोड़ा ऐसा ही है, मैं रिजर्व ही रहती हूँ ज्यादा। अपने स्कूल कॉलेज में भी आई वाज अ वेरी शाय तो नहीं, रिजर्व काइंड ऑफ स्टूडेंट। और सेकेंडली कि लाइक माय इन-लॉज, दे आर वेरी मच टॉकेटिव and they gossip a lot, and I don't do that. So this is the main difference between us. So I sometimes feel like a fish out of water when I'm sitting with them. I'm usually quiet. I don't
participate much, and because of this I have lost my self-esteem also. I feel like and you know, I have heard direct taunts also about this, that people who don't mix up or who are reserved, they are not liked by many people. मतलब इस तरह के कि मतलब जो लोग रिजर्व रहते हैं तो लोग उनको ज्यादा पसंद नहीं करते हैं. इस तरह के टॉन्ट्स भी मैंने सुने हैं कि people don't like to talk to the ones who remain reserved. और ये चीजें मुझे काफी तोड़ती भी हैं अंदर से. Now, is it a problem being reserved, Rabia? आपकी नजर में रिजर्व रहना एक मसला है? Is not okay? नहीं, नो मसला तो कोई नहीं है. नहीं है ना? तो लोगों की बातें, people only say things जो उनके मुताबिक नहीं होती, right? People, मतलब अगर आप, let me give you a very simple example. You've got kids, Rabia? I have one daughter. Your daughter, how old is she? She is 7 years old. She's 7 years old, right? और and when आप एक स्कूल में लेके जाती हैं और अपने बच्ची को दाखिल करवाती हैं, she must be in school, right? Yes. Good. और वो स्कूल, काफी लोग उस स्कूल में नहीं डालते मिसाल के तौर पे उस बच्ची को, बट आप अपने बजट को देखते हुए, अपनी सहूलत देखते हुए, अपने बहुत सी चीजों को देखते हुए कि करीब है दूर है, आप अपने घर के पास ही एक स्कूल में डाल देती हैं. बट आपके ससुराल में सारे बच्चे एक दूसरे हाई एंड स्कूल में जा रहे हैं. Okay. Right? Is that right to do that? क्योंकि आप तो अपनी नीड के मुताबिक हैंडल कर रही है ना चीजों को. जी बिल्कुल. लोग वो राय देते हैं जो उनकी नजर में they haven't been through this. Like कोरोना वायरस, किसी ने वैक्सीनेशन नहीं लगाई थी तो कहते रहे लोग कि इट्स नॉट गुड, ना लगाएं, इसमें ये है, इसमें वो है, इसमें ये है. बट जिन्होंने लगा ली है और लगाए हुए 1 साल 2 साल हो गया उनको, दे आर ओके विद इट. तो हम जब तक उस चीज को एक्सपीरियंस नहीं करते और हम समझते नहीं है तो लोगों की राय वैसी ही रहती है. अगर कोई आपके बारे में राय रखता है, that should not be a problem and that should not affect your self-esteem because आप एक capable person है. but unless अगर आप codependent हैं, आप उनकी राय को वैल्यू देती हैं, उसकी वजह से आपको लगता है कि आपकी एक्सेप्टेंस है, उससे लगता है कि जितनी आपकी जरूरत होगी, तो फिर उस कोडिपेंडेंसी आपको काम करना पड़ेगा. और ये काम करने के स्टेप्स हैं. आपको कोडेपेंडेंसी है. It is a type of codependency, na, because you feel hurt when somebody says that to you. Okay. Right? You feel hurt that somebody says that to you. You feel that I'm doing so much, लेकिन मेरी value नहीं है. I have a value and authority in this family, but वो समझते नहीं है. Or I'm not doing anything wrong, but yet it is wrong because they say it is wrong. Do you see what I'm saying? You're not the fish out of water. You're the fish in the water, but you're just different. एक है puffer fish, तो एक है, दूसरी fish, catfish. But you both are different. आप जिस पानी के लेवल पे तैरेंगी, आप जिस पानी के लेवल पे adapted है, वो puffer fish adapted नहीं है इस चीज में. और catfish swim करती है एक different water level पे, एक different temperature पे, एक different region की. We all come from different regions. We all come from different learning. हमारी different schooling हुई हुई, हम different habitat, values हैं, और आपकी एक value होगी. आप कम go हो सकती हैं, and that is okay, right? Make sense? और एक और क्वेश्चन है मेरा, जैसे लोग जो गॉसिप्स करते हैं बैठ के फैमिलीज में या कहीं पर भी, और स्पेशली दूसरों को लेट डाउन करने के लिए,
Acha, if we try to avoid those people, or if we totally, just move out of that place or of that room, तो ये मतलब ये भी क्या हमारी कोडिपेंडेंसी है कि हम उस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पाते इसलिए हम निकल जाते हैं वहां से, या हमें वहां पे रहना चाहिए, वी शुड रिमेन ओवर देयर, और सब सुनना चाहिए जो भी हो रहा है, हमारे बारे में कोई बात हो रही है या एक्स वाई जी जनरली कोई भी बात हो रही है बट इट इज हर्टिंग अस, तो इफ वी मूव आउट ऑफ द रूम, तो इसका मतलब ये है कि हम बहुत कोडिपेंडेंट हैं क्या उन लोगों की बातों पे जो हमसे बर्दाश्त नहीं हो, हम निकल कर आ गए। देखिए, codependent does not mean कि you moved out of the room then you're codependent. This is more about value. रबिया, आपकी वैल्यू के मुताबिक कोई गॉसिप कर रहा है तो आप उसको क्या समझती हैं? Simple. Ask yourself this question. Do you want to be a part of this gossip or no? Ask yourself this question. गॉसिप्स होती है ना, बेसिकली वो गॉसिप्स का जो मेन आइडिया, जो सेंट्रल आइडिया होता है ना, दैट इज टू लेट मी डाउन, यही होता है। How do you know the central idea is to let you down? Do they say that to your name? Do they say it with the name? Like talk generally in terms of whatever is bothering them. Maybe they are just expressing their views. It is directed towards me, I know that, but it is being said in a very generalized way, but it is directed towards me, I know. Okay. And how do you know it is directed towards you? Because I know it, because they are always talking about how the girls of today's age are and how the daughter-in-laws of this era are. So XYZ इस तरह की बातें होती हैं, तो of course हम समझ जाते हैं कि it's been directed towards us, because the older generation is very codependent on their younger ones. Sorry to say, be it my mother, be it my mother-in-law, anyone else, they are really very codependent on us. If we are always smiling, they are happy. If we make our face, or if we are not well, or if there's some conflict, so they become very rude or they don't like it. So it's their codependency that they cannot tolerate younger one who is questioning them, or who is trying to settle the conflicts. Okay. लेकिन देखें, there are two things that you're saying over here, Rabia. First is the older generation, जिसके बारे में आपने mention किया. And the other thing is about general comments. Now, you just made a general comment as well. Okay, the older generation is codependent. Okay. Now, amongst us, does that mean you're directing it to anyone amongst us? No, No. All I don't know the age groups of the participants. मुझे तो पता नहीं कौन-कौन. Exactly. हमें भी, मुझे भी नहीं पता, but we don't know. But it is a general comment, right? Now, अगर मैं codependent हूँ, तो आपका ये comment शायद मुझे hurt कर जाएगा. I'm giving you an example. ठीक है? If I'm codependent, because this general comment is not directed towards me, but I am thinking it is directed towards me. मैं इस चीज के बारे में कॉन्शियस हूँ कि लोग, अगेन वही टर्म, लोग क्या कह रहे हैं. नाउ जब आप इंडिपेंडेंट हो जाते हैं एंड यू ब्रेक दोस चेन्स रबिया, तो आपको फिर फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कहते हैं. ठीक है? और one of the reasons हमारी older generation does not understand this maybe is because ये codependency जो है बहुत recently study किया गया है. इसके बारे में बहुत सी चीजें हैं, हमारा माशरा, हमारी फिल्में. I will just say this, I mean this is a very simple and small thing कि अभी 2 दिन पहले हम मेरे हस्बैंड फ्लिप कर रहे थे चैनल्स को, तो उसमें उन्होंने पुरानी मूवी एक नजर आ गई, एंड दिस वाज इंडियन फिल्म एंड बॉलीवुड की फिल्म, आई मीन. और वहाँ की फिल्म देख के एंड ही वाज लाइक रिमेंबर दिस. अच्छा, मैंने कहा स्टोरी क्या, मुझे याद नहीं आ रहा स्टोरी क्या थी. करते 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 I don't know, from somewhere it clicked me कि how these
फिल्म्स एंड मूवीज जो हमारे लोग देखा करते थे और हमने भी देखी है बचपन में, बट बिकॉज वी कम इनटू अ न्यू एरा ऑफ गूगल, तो वो तो उनका एंटरटेनमेंट इसी पे होता था, जाके लेके आते थे, वही देखते थे, उसी किस्म के जोक्स होते थे, उसी किस्म के गाने होते थे, वही लिरिक्स होती थी कि हम उसके बगैर नहीं रह सकते। और औलाद, माँ ही औलाद के लिए कितनी कुर्बानी देगी, और औलाद ने माँ को खुश ही करना है, औलाद का काम है कि उसने माँ को खुश करना है। और एक पिक्चर भी फेसबुक पे और सोशल मीडिया पे बड़ी वायरल हुई थी कि माँ बीमार है, जो भी है, लेकिन अपनी औलाद का कितना ख्याल कर रही है कि इस वक्त भी वो औलाद के लिए कुछ बना रही है, जस्ट सो दैट शी कैन बी एक्सेप्टेड। सो ये चीज हमें फीड की गई है, ये चीज it takes a while to people, and that's why I thought this topic is very important कि हम कोडिपेंडेंसी पे काम करें, क्योंकि somehow हमने ये पैटर्न चेंज करना है, right? And if you need to do the analysis about this, again go through all those things, and if you feel कि आप हर चीज पे आपका टिक आ रहा है, then you might be codependent, and Okay, you might be able to work on this. okay, if we become independent but our partner is still codependent on us, and he finds his happiness or peace in very minute or little things, like if we go to a party, right, and if the host is asking us to take off the mask, right, and I say no, I won't, because I'm very conscious about my health, so my partner dislikes this thing, okay, and he yells at me and he finds it humiliating that I had insulted the host. He is so much codependent on others and on me. So how do we fix our codependent partners? If even we become independent but our partners are so much codependent, so how do we fix them? Absolutely brilliant question, Rabia, because apparently this is very common in our society. Again, point number 2 मेरा यही था कि हम feel करते हैं कि we need to fix the other person. That is a sign of codependency, you know, that आप चाहते हैं कि आप दूसरे person, वो जैसा भी हो, वो आपको उस पे, you know, you don't have the issue with it, but if he's, आप चाहते हैं कि उसकी problems को, उसके issues को हम fix करें. If he has a problem with that, and he needs to help himself. पर हमारा कंट्रोल किस चीज पे? हमारा कंट्रोल हमारे अपने रवैये पे है, अपनी चीजों पे है, एंड हम उसी पे रहेंगे. हमारी वैल्यूज हैं, हमारी नीड्स हैं. We can't just ask other people, like point number 5 मेरा यही था कि the other people control us. So if the host asks you to take off your mask, point number 2 मेरा यही था कि the codependent person finds it difficult to say no, right? हालांकि नो कहने के बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे तरीके हैं, जिसमें आगे वाले पर्सन को नो नहीं लगेगा इस तरह, वो इस तरह लगेगा कि you know, in a very polite or decent manner में, कि आगे वाला पर्सन will have to accept it. But ये चीज आप इस पे work करें, that you have to only work on yourself, not on the other person, on yourself. Is that clear, Rabia? I really don't know, okay, why we all know that this pandemic is so much threatening, but I have seen people arguing with their guests, or the people sitting around them, making fun of them to take off their masks, and they make fun of them. Why are you always making masks? Why are you sanitizing your hands again and again? So I think those people are also codependent. That's not our issue over here. We need to work on ourselves, right? हमारा issue दूसरे लोग बोलने, that's not our issue, right? But हमारा issue ये होना चाहिए, हमारा agenda यही होना चाहिए कि हम अपने ऊपर काम करें, क्योंकि change starts with one. And like I said, हर कोई accept नहीं करता चीजों को. And that is why I have a vision जो मैंने initially state किया, कि my vision is to empower the soul through change. क्योंकि change हर दौर का एक नया दौर आता है. इसमें जब नया दौर आएगा,
उसमें चेंज होगा, उसमें नए तौर तरीके होंगे, नए तरीका होगा तरबियत का। 2 साल में लर्निंग मेथड चेंज, अब ऑनलाइन हो चुकी है सारी चीज, हर चीज बदल गई है। उस चीज को अभी भी लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते। पीपल थिंक इससे लर्निंग नहीं हो सकती, पर हाउ इंटरेस्टिंग, अभी यहाँ पे जितने भी लोग रूम में बैठे हुए हैं, दे आर ऑल लर्निंग थ्रू ऑनलाइन, एंड बच्चे ऑनलाइन लर्निंग कर सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन हाउ यू डू इट। सो let people, I would say, if I was you, I wouldn't bother, because my safety is important, my well-being is important. So I would have my mask on. People laugh. I am working on myself. I am working on it because I had been a very codependent person ever since I got married, and before that also I think I was codependent. Maybe it was in my genes, or I inherited from someone else, because when my daughter was born, I myself opted for C-section. I had opted for it, but then I made my life miserable for myself, because people made me realize that as if I have committed a very big sin by opting for C-section. And all my the golden time when my daughter was born and the months later on, I was in a miserable state. I was depressed. I was always cursing myself that I am not a good mother because I had opted for this. During when I was in hospital for the 4 or 5 days, I was not good mentally. I was in a state of low. I was getting into broken self-esteem कि शायद मैंने बहुत बड़ी कोई गलती कर दी, और people made me realize, even my own family members, my father, my own मैके वाले people जो होते हैं उन सब ने, so I was very miserable. मैं इतना कोडिपेंडेंट थी उस वक्त, हालांकि अगर मैं नहीं होती ना तो मेरा वो टाइम पीरियड बड़ा अच्छा हो जाता, और उसकी वजह से मुझे बड़े इश्यूज फेस करने पड़े. I was in such stressful situation कि I could not breastfeed my daughter. बहुत सारे इश्यूज हुए थे. अब मैं रियलाइज करती हूँ कि मैं क्यों ऐसी थी, काश मैं नहीं होती उस वक्त ऐसी, तो मेरी जिंदगी बड़ी आसान हो चुकी होती. And just work on yourself. इस चीज के ऊपर ज्यादा सोचने से there should be only one thing, कि आप इस चीज को तब सोचें कि जब आपको पता है कि आपका नेक्स्ट, ताकि ये रिमाइंडर के तौर पे रहे कि मैंने ये किस तरह अपनी आगे की जिंदगी को किस तरह बनाना है. So all these things have an effect, and they should be done on a conscious level. On a conscious level, to educate ourselves and to work on ourselves and to even remember the past on a conscious level. So that's, yeah. And does anybody else want to ask anything else? Have a question or want to say? Sorry, Wafa, I need to leave the meeting. My daughter is annoying me a lot. She is really very busy और मुझे खाने का बोल रही थी, तो मैंने उसको काफी देर से वेट करवाया था. I'm really sorry. I have to leave. Thank you. That's okay. Thank you for joining. No, thank you for joining, Rabia. It's a pleasure. Thank you so much. Anybody else would like to ask or say anything? Okay, that's fine. Right. Can you see my screen? And this is my contact number. And I would like and request you कि आप मुझे जरूर feedback दीजिएगा इस session के बारे में, because it matters to me. ये मुझे improve करने में बड़ी help करता है. And on my page, do follow my Facebook page or my YouTube page, the YouTube channel जो है. This is my contact number and through my email as well. इसकी screenshot ले लें, आपके लिए आसान हो जाएगा, और आप जरूर मुझे follow करें, and it would help me help you all. So thank you so much for joining and making this session successful. और अल्लाह करे कि इससे आपको फायदा भी हुआ हो और आप इन चीजों को अपने लाइफ में थोड़ा बहुत चेंज के साथ बेहतर बना सकते हैं, even if you take small baby steps.
So thank you so much. Is there anybody who wants to say anything, or should I close the meeting? Okay. I would say there's nothing to say. Right. Thank you so much. I would like to close the meeting now. And thank you so much for joining. Please do give me your feedback. Allah Hafiz.